Now let's come to oblique collision. Now this is important. इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे सिचुएशन बनते हैं. हमारा मेन डिस्कशन यही रहेगा this class and the next class. I'll try to, क्योंकि head-on collision is quite straightforward. Now see, in oblique collision, there are two bodies. Just before the collision, the velocity is u1, the velocity is u2, theta 2, theta 1. During collision, a force will act along the common normal. Yes, sir. And this force along the common normal will change the velocity along the common normal. There will be no change in the velocity along the common tangent. Common tangent के दिशा में कोई भी velocity change नहीं हो रहा है. तो मैं यहाँ लिख दूंगा since force is along common normal, no change in velocity along common tangent, right? So after collision, this starts to separate. Let's say the velocity in this direction, this becomes v2 dash and this becomes v1 dash. But यहाँ पे यदि देखें तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u1 cos theta 1 और ये जो है ये है u2 cos theta 2. इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है u1 sin theta 1 और इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है u2 sin theta 2. So I can say that this will still be u1 sin theta 1 and this will be still be u2 sin theta 2. Yes. So the resultant velocity, I can use vector and I can say the resultant velocity v1 will be in this direction and the resultant velocity v2 will be in this direction. Yes. This angle will be theta 1 dash and this angle will be theta 2 dash. That is the direction of movement after collision. So from the first diagram here, यहाँ जो पहला डायग्राम है यहाँ से हम velocity of separation approach निकाल सकते हैं. Velocity of approach होगा u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2. यहाँ से हम इनिशियल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं. अब देखिए y डायरेक्शन का मोमेंटम सेम रहेगा तो इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने की कोई जरूरत नहीं है. तो हम यदि x डायरेक्शन में बस करें तो m1 u1 cos theta 1 plus m2 u2 cos theta 2. This is initial momentum. इधर से हमारे पास velocity of separation आएगा. Velocity of separation जो आएगा वो आ जाएगा v2 dash minus v1 dash. ठीक है. और यहाँ से हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी आएगा इस वाले डायग्राम से. दैट इज m1 v1 dash plus m2 v2 dash. तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट इज m1 u1 cos theta 1 plus m2 u2 cos theta 2 is m1 v1 dash plus m2 v2 dash and E is equal so I'll get my v1 dash. These equations are exactly like the head-on collision except for the cos theta part. Okay. So I can write m1 minus E m2 into u1. In place of u1 I write u1 cos theta 1 plus m2 1 plus E. In place of u2 I write u2 cos theta 2 upon m1 plus m2. And v2 dash I'll write m2 minus em1 u2 cos theta 2 plus m1 1 plus e u1 cos theta 1 upon m1 plus m2. यहाँ पे अब हम कह सकते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 dash square plus u1 sin theta 1 square under root. ये बॉल का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होगा वो ये हो जाएगा और v2 का जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा v2 dash square u2 sin theta 2 whole square under root. एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tan theta 1 dash मतलब कोलिजन के बाद किधर की तरफ जा रहा होगा. तो tan theta 1 dash is u1 sin theta 1 divided by v1 dash. And tan theta 2 dash is u2 sin theta 2 divided by v2.